All right. So let's begin today's second half of the chapter, which is insurance to protect income. One more time, the insurance to protect income. There are mainly disability insurance is that insurance that is used to protect income, right? And we know that disability, you can have your own individual disability policy. You can have a disability policy from group. If you're part of a group, you can have a disability policy offered to you from your creditor, which is lending institution, mainly banks, through credit cards. You can get a disability policy from CPP, but for that you have to qualify for total disability definition, very strict criteria. And then you can also get some disability benefit from your worker compensation plan, which is a provincial plan that varies province to province. So these are the five things. And yesterday we were talking deeply about individual disability plans, right? And we have covered until the definition of disability. Before I begin, I would like to ask Usman Bhai this question. I will give you a scenario. I am having an own occupation disability insurance plan for myself, right? I was an engineer who used to work in his own field, right? Now I'm disabled and I'm not able to go back and do my engineering work that I was doing before, but I'm able to do teaching in the engineering. I'm making some income from there. If I want to keep receiving benefit from disability, what kind of disability insurance plan I should be having if I want to receive benefit while I do some other work as well, and full benefit? It's a full benefit. So which type of disability insurance I have on me? If I'm receiving full benefit and I'm also working some other job and I'm getting money from that job, but also from my disability, I'm getting full benefit. What type of disability plan I have? It's a regular one. Uh, it's Is it own occupation? Is it regular occupation? Is it any occupation? क्या बोला, नॉन ऑक्यूपेशन? Own occupation, regular occupation, and रेगुलर ऑक्यूपेशन. regular occupation. Okay, Mehreen, is Own he right or occupation. wrong? No, own Okay. occupation. Very good, Kumkum. Very good, Mehreen. Swan bhai, I told you that when I'm receiving full benefit, look, catch is a full benefit. If I'm even doing some other job, making money from that job, but still I'm receiving full disability benefit, then my plan has to be premium plan. And that plan is own occupation. आप जो रेगुलर ऑक्यूपेशन का कह रहे हो ना, उसमें मुझे पूरे बेनिफिट नहीं देंगे, जितने मुझे इनकम बन रही है वो रिड्यूस करके मुझे और बेनिफिट देंगे टू मेक प्रॉपर. वो है रेगुलर ऑक्यूपेशन. एंड देन थर्ड प्लान होता है एनी ऑक्यूपेशन. एनी ऑक्यूपेशन में तो क्या है कि मैंने जैसे ही इनकम बनाना शुरू की किसी भी और सोर्स से, डिसेबिलिटी की पेमेंट स्टॉप हो जाएंगी. दिस इज द चीपेस्ट प्लान. जब तक डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. Okay. Now let's go talk about some occupational clauses. You know what is occupational clause? देखिए, ऐसा होता है, आप बताएं मुझे कि लेट्स से मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, कुमकुम एडमिन वर्कर है, महरीन नर्स है, अबीरा जो है वो टीचर है, राइट? और लेट्स से साद यहाँ पे नहीं है, साद जो है वो वेयर हाउस वर्कर है. किसका डिसेबिलिटी प्लान महंगा होगा और क्यों होगा? बताओ. बताएं. आप मुझसे पूछ रहे I ask anybody. Yes, Mehreen. हैं? जैसे ट्रक ड्राइवर है, राइट? तो उसका काम जो है मतलब रोड पे ज्यादा है और उसके चांसेस ज्यादा है एक्सीडेंट के, तो उस हिसाब से उसका प्लान जो है वो सबसे एक्सपेंसिव होना चाहिए. और व्हाट अबाउट, यस दैट्स ट्रू, अगर आपकी ऑक्यूपेशन रिस्की है ना, तो आपका रिस्की है प्लान क्योंकि रिस्क है. हायर प्राइस का होगा. अब अगर कुमकुम सिर्फ जाती है, सुबह ऑफिस में बैठती है, सारा दिन ऑफिस में बैठ के वापस घर आ जाती है, नाउ शी इज नॉट एक्सपोज टू रिस्की एनवायरनमेंट. हर ऑक्यूपेशन क्लास वुड बी less risky and her plan would be cheaper. If you are working in warehouse, again in warehouse there is a lot of machinery, forklifts operating, it's a risky work. The riskier occupation you have, the higher the premium you pay. So इसमें क्लासिफिकेशन होती है, उसको हम नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं फ्रॉम 3A 4A, इस तरह के नाम है इसके क्लासिफिकेशन के. नंबर जो मोस्ट प्रीमियम क्लास है दैट इज 4A. ये उन प्रोफेशनल्स के लिए होती है जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं,
राइट, डेंटिस्ट हैं, मतलब इस तरह के लेवल के काम करते हैं, तो ये सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो इनकी क्लास होती है 4A। दैट मीन्स इफ somebody's प्रोफेशन इज फॉलिंग अंडर 4A, देयर प्रीमियम विल बी मच चीपर। और 4A के बाद आता है 3A, थोड़ी बहुत रिस्की, फिर 2A, उससे जरा ज्यादा रिस्की, सबसे जो लोएस्ट एंड हाईली रिस्की क्लास है उसको ए क्लास बोलते हैं, ए, सिंपल ए। सो ए में कौन आता है? मैनुअल लेबर वर्कर, पीपल हु आर ड्राइविंग ट्रक्स, ठीक है। इसके अलावा आप, सॉरी, यू नो व्हाट, ए इज स्किल्ड मैनुअल वर्कर हु फेस न्यू और नो वर्क प्लेस हैजर्ड। जो सबसे लोअर क्लास है ना, दैट इज बी। मेक अ नोट, लोअर क्लास इज बी। बी में क्या आता है? मैनुअल लेबरर्स हु वर्क इन हैजर्डियस एनवायरनमेंट सच एज होम कंस्ट्रक्शन वर्कर, बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वेयर हाउस वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। सो दीज आर द पीपल जिनको बी ऑक्यूपेशन क्लास में रखा जाता है। एंड अगर ये बी क्लास में है, सो देयर डिसेबिलिटी प्रीमियम विल बी हायर। ठीक है, क्लियर उस्मान भाई? Everybody is clear with that? So occupation class se question, they might ask a question कि this is a person, this is his profession, and this is his class. You tell me whether he is having higher premium, he has to pay higher premium than somebody else who is from class 4A or not. So आपको 4A जो है वो सबसे बेहतरीन क्लास है, B is the most riskiest occupational class. ठीक हो गया? तो हम All right. क्या कहते हैं, ये तुम मुझे बी में हमारे पास है मैनुअल लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर, एंड ट्रक ड्राइविंग भी इसी में आएगा। सो ट्रक ड्राइविंग मोस्ट लाइकली उसकी एक सेपरेट क्लास होती है, बट दैट्स ओके, इफ देयर इज नो क्लास गिवन देन इट विल आल्सो फॉल इनटू बी, ओके, राइट? इवन टैक्सी, बिकॉज द रिस्क इज वेरी हाई, वी आर ऑलवेज ऑन द रोड एंड यू नो सेफ्टी इज कॉम्प्रोमाइज, सो दैट इज व्हाई वो बी क्लास में आएगा नॉर्मली। ओके, सो another important thing that you need to remember is that, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लास ए का पर्सन है, आई मीन क्लास ए इज अ रिस्की क्लास, राइट, सेकेंड लास्ट क्लास है ये, तो दिस पर्सन हु इज इन क्लास ए और क्लास बी माइट नॉट बी एबल टू गेट ओन ऑक्यूपेशन डिसेबिलिटी। इनको नहीं अलाउ करते वो ओन ऑक्यूपेशन, इनके लिए सिर्फ एनी ऑक्यूपेशन अलाउ होती है। इफ यू आर फ्रॉम अ रिस्की क्लास, आपके चांसेस ऑफ डिसेबिलिटी हायर हो जाते हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई some insurance companies don't allow risky professions get own occupation. So for them, the only option is any occupation disability. Sounds good? लेट्स से अगर मैं वेयर हाउस में काम कर रहा हूँ और मैं कहूँ कि मुझे ओन ऑक्यूपेशन दे दो, मैं फोकलिफ्ट चलाता हूँ, ओन ऑक्यूपेशन दे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी कि नहीं, मेरे डिसेबल होने के चांसेस ज्यादा हैं मेरे प्रोफेशन पे, तो वो कहेगी नहीं, आप एनी ऑक्यूपेशन दे सकते हैं, आपको ओन ऑक्यूपेशन नहीं दे सकते। ओन ऑक्यूपेशन किनको मिलती है? जो लोग प्रीमियम 4A क्लास से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर्स, सर्जन, नर्सेज, लॉयर्स, जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको मिलती है ओन ऑक्यूपेशन। साउंड्स गुड? All right, so now let's take a look into this example. Anik took out a disability income replacement policy when she worked as an administrator in the office, a printing factory. Her class is 3A. She paid $225 a month for her disability plan. 5 years later, Anik changed jobs with the same employer and is now working as staff supervisor on the floor of the printing plant. This is an A classification job. So her policy was guaranteed renewable before 5 years. So she was able to keep her coverage, but her premium increased to 350 a month just because her classification changed from 3A to A. So this is an example you need to remember कि अगर आप कि ऑलरेडी डिसेबिलिटी प्लान चल भी रहा है, पहले आपका प्रोफेशन जो था वो लेस रिस्की था, बट नाउ यू मूव्ड इनटू अ लिटिल बिट रिस्कियर प्रोफेशन, इंश्योरेंस कंपनी will increase your premiums. Sounds good? Anybody has any questions so far? Okay, so the next topic is waiver of premium. Waiver means waiving off something, खत्म कर देना, हटा देना कोई चीज, waive off. All right, so waiver of premium, very important concept. मान लें मेरा एक disability का plan है, right? I was paying every month into my disability plan. Now I get disabled. अभी मैं डिसेबल हो गया हूं तो मेरी इनकम तो रुक गई. डू यू थिंक आई कैन कंटिन्यू पेइंग इनटू माय डिसेबिलिटी प्लान?
नहीं. So there's always a waiver in place of your disability contract. The moment I become disabled and my income stops, they automatically stop my premiums for that time until the time I'm receiving my benefit. Just time mein I'm receiving my benefits, I don't have to pay my monthly premiums. This is known as a disability waiver in the disability contract. Majority of the policies have this waiver available to them. इसकी दो conditions हैं. जब तक मैं benefit receive कर रहा हूं कंपनी से, उस वक्त तक I don't have to pay my monthly premium. जैसे ही benefit stop हो जाएंगे, then I need to start paying back. Sounds good? और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मैं एज 65 तक पहुंच गया हूं, क्योंकि डिसेबिलिटी की लास्ट एज कौन सी होती है? 65. Nobody can have disability after the age of 65. 65 is the last age you can get disability protection because income ही रुक जाती है majority, that's a retirement age. So 65 अगर हो गया है तो फिर उसके बाद मेरे प्रीमियम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे. Sounds good? दिस इज नोन एज वेवर ऑफ प्रीमियम. तो कोई मसला नहीं है, जब हम डिसेबिलिटी पे जाते हैं बेनिफिट मिलना शुरू होते हैं, जब तक बेनिफिट मिलते रहेंगे तब तक वी डोंट हैव टू पे मंथली प्रीमियम्स. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट इज राइडर्स. हु कैन टेल मी इन इजी वर्ड व्हाट इज अ राइडर? जब हम कोई चीज ऐड ऑन कराते हैं बेसिकली, Yes. एक आपका पॉलिसी है उसके अंदर हमने कोई और मजीद एक क्लॉज ऐड कराना है या कोई चीज ऐड करानी है, वो ऐड ऑन को राइडर. Very nice, Kumkum. Very nice, Mehreen. मेरे लिए simple. I take this analogy of pizza, that I'm ordering a cheese pizza. Whatever topping I'm adding, I call these toppings riders. Because every topping you add on the pizza, you have to pay extra price. Similarly, if you want to add toppings on your basic disability or any insurance plan, you can choose riders, but for that you have to pay extra price. So extra stuff is good. Adding is good. For me, analogy is, topping on my pizza. That's how I remember riders. Okay, so let's see what kind of riders are available in disability plan. Very important. They will ask you questions from this. Number one rider that I will go over is future purchase option, FPO, right? As name is suggesting that this is a future insurance purchase option. So what happens? Let me ask you a question. Jaya, if somebody is on an individual disability plan, what percentage of the income they get as a benefit, as a rule of thumb? 60. 60%. Anybody always getting 60%. So let's say my income right now is 100,000 and I'm getting 60% of that in my disability contract. But I am a little bit concerned. I say maybe in 5 years from now, my income will go up to 150. That's what I'm thinking. That I'm working hard, my income will go up and I want to purchase more insurance at that time. But I'm a little bit worried. What if my health go wrong in next 5 years? And they deny me the extra insurance that I need at that time. So why would not I go for this rider, which is future purchase option right now, so that in future if I want to increase my insurance, I can get it done without medical. That is what FPO means, फ्यूचर परचेज ऑप्शन. तो आपने अभी से एक राइडर अपनी बेसिक प्लान पे ऐड कर लिया है कि अगर 5 साल बाद 6 साल बाद मुझे अपनी इंश्योरेंस इंक्रीज करनी है, कि मेरी इनकम बढ़ गई है, तो मुझे मेडिकल के बगैर ही अप्रूवल मिल जाएगा. उसके लिए मैंने ये राइडर ऐड किया है, फ्यूचर परचेज ऑप्शन. एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? ये राइडर भूलना नहीं है. फ्यूचर परचेज ऑप्शन क्या है? इंपॉर्टेंट राइडर है दैट अलाउज यू टू बाय एक्स्ट्रा इंश्योरेंस इफ योर इनकम गोज अप विदाउट मेडिकल insurability proof. So, but one thing you need to remember, by no means you can cross 60% of basic coverage. By no means. So let's say my income was 100,000 before, now the new income is 130. I can only purchase up to 60%, which is 60% of 130,000. I cannot by no means cross 60% with this option. There are a few riders I will discuss later on that will allow you to increase your 60% weightage, but FPO will only allow you to get 60%, not more than that. Okay, let's go into the next rider. Let me give you an example so that you will remember. Okay, forget about it. That will make it complicated. Just remember what I told you about FPO. That's more than enough. Now the next rider is COLA rider, COLA, cost of living adjustment.
Whenever you see a word cola, cost of living adjustment, that means somebody is talking about inflation, right? Because if I'm receiving a disability benefit right now in year 2024, maybe $2,000 a month that I'm receiving is sufficient for me right now. But maybe 10 years from now, that 2,000 per month is not sufficient because there is inflation and money has lost buying power. In that regard, some people want to add a rider on their disability contract that we want automatic inflation adjustment, and this rider is known as COLA rider, cost of living adjustment. Everybody's clear? This will take care of the inflation every year. जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, जिस परसेंटेज से इन्फ्लेशन बढ़ती है, आपके बेनिफिट को भी इंश्योरेंस कंपनी उस परसेंटेज से इंक्रीज कर देती है, राइट? सो आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होती जा रही है एज द प्लान गोज. मेरीन, यू हैव अ क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस में ऑटोमेटिक क्या चीज तुमने बोली? ऑटोमेटिक मुझे वो समझ में नहीं आई बात. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये राइडर ले रखा है अपने डिसेबिलिटी प्लान के ऊपर, और कल को क्या होता है कि इन्फ्लेशन 5% बढ़ गई है 2025 में. पहले आपको $2,000 के बेनिफिट मिल रहे थे, लेकिन अभी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, चीजें महंगी हो गई, तो अब आप सेम $2,000 से वो चीजें नहीं खरीद सकते जो आप इस साल में खरीद सकते हो. तो आपने एक राइडर बाय कर लिया जिसको कोला राइडर बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट. वो राइडर क्या कर रहा है कि अगर लास्ट ईयर इन्फ्लेशन 5% बढ़ी थी तो उसने आपकी बेनिफिट भी 5% से इंक्रीज कर दिए, ताकि आपकी बाइंग पावर, डॉलर की बाइंग पावर लूज ना हो, इन्फ्लेशन एडजस्ट होती रहे. तो ये वो राइडर है. एवरीबडी इज क्लियर? उस्मान भाई, जाया, यू क्लियर? और इसका नाम क्या? ऑटोमेटिक? नो, मैंने तो ऑटोमेटिक का कोई वर्ड नहीं बोला. नहीं आई क्या? बोला कोला. ओला बस. ओके. कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट. हाँ, तो सही है. इसके ऊपर भी अगर ये लेंगे हम लोग इसको, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्राइस पे करोगे एवरी मंथ इसकी. तो इसके ऊपर भी परसेंटेज होगी. द 60% दैट अप्लाइज. दैट अप्लाइज 60%. 60% अप्लाइज. जहां पे 60% नहीं होगी ना, वो दो ही हैं. वो जब आएंगे राइडर्स तो मैं आपको बता दूंगा, लिखवा दूंगा कि इनमें हो सकता है. बाकी 60% का रूल ही है, वो आपने याद ही रखना है. इसको क्या कहलाएंगे? राइडर, RIDER है. RIDER, राइडर. ओके. ओके. So this is the second rider. And now I want to tell you कि इसमें कुछ परसेंटेजेस भी होती हैं कोला राइडर में. सो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज गिव यू 2 to 4% ब्रैकेट, कि 2% से लेके 4% तक बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन कितनी ऊपर नीचे हुई है उस साल में, वो आपको एडजस्ट कर देते हैं. ठीक है. आई देर इज राइट डाउन, देर इज अ चार्ट इन द बुक अंडर दिस कोला राइडर. I'm not able to see the table number of this. Let me see if I can give you the table number. No, there's no table number, but there's a chart. So normally किस तरह से होता है? मेरी लेट्स से आपका डिसेबिलिटी प्लान है आपके पास. अभी ये कौन सा साल चल रहा है? 2024. अभी आपको 2,000 पर मंथ के बेनिफिट मिलते हैं इसमें से. मान लो 2024 में, 2024 में इन्फ्लेशन वेंट अप 3% 2024 में. तो 2025 के जो आपके बेनिफिट होंगे वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएंगे? 3%. 3%. So you need to see the inflation rate of the previous year, and that is applied on to the benefit of the next year. Always like this. Because I need to see how much was the inflation in 2023. I will adjust that in your 2024 plan. Then I will see how much inflation rate was in 2024. I will adjust that in your 2025 benefits. Then I will see how much is 2025 inflation rate. I will adjust it into your 2026. Sounds good? तो इसमें जैसे अगर उस पर 2% या 3% लिखा हुआ है और इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ी है तो हमें मिलना वो उतना ही 2% 3% के हिसाब से जितना उस पर राइडर. Absolutely. Sometimes some contract says you can only get maximum of 2%, then you are only getting 2%. Some plan says you can maximum get 5%, and some are in the middle. So you need to see the contract wording then, what kind of plan it is that you are educating your client or you're choosing for your client. Of course, if some rider is giving you 5% increase, then they charge higher price. If somebody is giving you 2% increase, they charge, of course, less price. In insurance, nothing is something like quotation. Everything is designed in insurance. You designed which option you want. ये लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदते रहते हैं ना, गूगल की पे जाके ये रेडियो पे ऐड आती रहती है, इंश्योरेंस ले लो $25 की, $7 की. वो सब बकवास है. वो आपको एजुकेट ही नहीं करते, वो आपको पागल बना के कोई भी जो बजट में प्लान फिट हो रहा है आपको थमा देते हैं. But insurance, as you are learning in this license, is always designed
based on what Usman Bhai's need is, what rider he wants. He's paying, he's customizing. Insurance is always customized plan that fulfill the need for your family. Sounds good? So never ever pay attention to when people are quoting, this is the quotation, this is the quote. Sit down, get yourself educated, and then tell your advisor, I want this feature. Now tell me what is the customized plan. And that's how you design it. Okay. Kiran, are you with me? All right. I need to see more excitement on your face. That's cool. That's cool. Okay, I think Abira is with us. Kumkum, Swaleji, everybody is with us, right? Guys, those with videos off, keep raising your thumb so that at least I know, like Kumkum did. Okay, awesome. So next rider is AD&D, accidental death and dismemberment rider. You can add this rider on top of your disability plan. Look, disability plan does not covers you in case of a life insurance, right? You know that this is not a life insurance plan. This is a disability insurance. But you can buy a rider that the name of the rider is accidental death, AD, and dismemberment. Now, this rider is saying that while during serving your disability, if disability is so severe that somebody dies because of an accident only, somebody got into an accident, got disabled, but actually died because of that accident finally. So this accidental death and dismemberment rider will pay the beneficiary lump sum money, tax free, like how life insurance pays. You need to remember, this is not a life insurance, so this is a way cheaper rider than buying a life insurance, way more cheaper, because the only way you can qualify for this life insurance money is if you are into an accident and you die because of that accident. Only then you are getting paid. So this is the cheapest form of life insurance that people can add onto their plan with minimum premium, because they define that in case of suicide we don't pay, any natural death we don't pay, we only pay if you die because of an accident. So that is accidental death and dismemberment rider. Now, what is dismemberment? Dismemberment is losing one or two or more limbs. जो हमारे बाजू, हाथ, पाँव, arms, legs, trunk, major organ, I would say, if you lose one or more of major organ due to some disability or running into an accident, that is known as dismemberment. One thing you need to remember, let's say I add a rider of 500,000. मैं कहता हूँ I am adding a $500,000 rider of AD&D. That means if I get into an accident, I get disabled and then I die, I want my family to receive how much? $500,000 tax free. I want this rider. Now, let's say because of this accident, I died. My family will get what, Jaya? Benefits, basically. How much? $500,000. $500,000. But let's say I did not die. I get into dismemberment. I lost a couple of my organs, but I'm alive. Then how much I will get from this rider? My policy was $500,000, Jaya, 500,000. At the 60%. In that regard, it's up to insurance company. They will see how important the organ was to you in your work. If they feel like the organ was really important, they can decide the percentage. So from 500,000, they won't pay you 500,000, but they'll say, okay, because you lost your limb, now we're going to pay you 30% of your face amount, whatever the 30% of 500,000 would be. So dismemberment is generally paying you lump sum money, but who will decide the percentage? It's the insurance company, because they will see how important your limb was to you in your work, and then they come up with a percentage. Guide, everybody's clear with these two things? You can add this as a rider. This is the cheapest form of life insurance, because you only qualify if you die because of an accident. Accident. Okay. All right. So now we're done with this rider. Anybody has question, you can ask me. Okay. So next one is partial and residual disability benefits. Partial and residual, right? So write down, this is a different word. Yesterday we discussed something which is presumability insurance, right? And that was if you seriously get sick, like you loss of permanent speech, permanent hearing,
and then company says, okay, we waive off your waiting period and we start paying you. That is presumability disability insurance. I'm talking about right now partial and residual disability benefit. Clear है? इसको अंडरस्टैंड करना है. रेजिडुअल डिसेबिलिटी से क्वेश्चन एक भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं. राइट, दिस इज अ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बिकॉज रेजिडुअल डिसेबिलिटी हैज अ फॉर्मूला. तो हमने फॉर्मूला गो ओवर करना है. सो गेट रेडी. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज अ रेजिडुअल disability benefit, and then we'll look into examples because I want you have to have a great concept of this. So residual disability benefit, what is a residual disability? So residual disability encourages a disabled worker to return to workplace as soon as they are physically able. This benefit says they encourage people to go back to work as soon as possible, right? A residual disability benefit is a type of partial benefit offered by many disability policies. This means that if the insured is able to work part-time following a total disability period, he is back onto the work, but only working how much? Part-time. Then the disabled will still receive a portion of his benefit. So this is known as residual disability benefit. Residual means जो बचा हुआ हिस्सा है. ये किन लोगों को मिल रहा है? देखो, इंश्योरेंस कंपनी इनकरेज कर रही है उन लोगों को जो डिसेबिलिटी के बाद पार्ट टाइम वापस चले गए हैं अपनी जॉब पे, जो वो काम कर रहे थे. दे वेंट बैक पार्ट टाइम ऑन टू दैट. अब पार्ट टाइम जा रहे हैं तो कुछ पैसे तो बना रहे होंगे ना पार्ट टाइम काम करके. So when they are making some money on the part time, that does not mean they are making full income that they were making before disability. In that regard, residual benefits will pay the remaining portion. So as a rule of thumb, note down, if you are making 80% of your income before injury on part time, then you will get zero benefit from residual disability benefit. If you're making how much? 80%, you get how much? $0. And if you get 20% when you're working part-time, then you get 100% benefits. So below 20 or 20, you get 100% benefit. 80% or more than 80% if you're making part-time money, you get 0% benefit. In between 20 to 80, I'm going to give you a formula how you calculate it. All right? Everybody's clear with this? Yes, Kiran? अच्छा, जस्ट वन क्वेश्चन. हाँ जी. देखिए, जैसे अब जो है फर्ज के जैसे हम कह रहे हैं कि भाई अगर आप जैसे इंजर्ड हैं, ठीक है, अब Yes. पार्ट टाइम अगर थोड़ी देर बाद फर्स्ट फर्स्ट करें 3 वीक्स में तबीयत जैसे बेहतर हो गई एंड दैट पर्सन इज एबल टू गो बैक टू वर्क, राइट? तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर वो 20% भी अगर वो जैसे काम कर रहा है जाके पार्ट टाइम, तब हम उसको बेनिफिट्स देंगे, लेकिन अगर वो 80% कर रहा है तो फिर हम उसे बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं. तो लोग इस तरह नहीं करेंगे कि लोग फिर बोलेंगे हम 100% ही डिसेबल अभी रहेंगे और हमें मतलब यानी ताकि फुल बेनिफिट्स मिले. ओके, सो किरण बेसिकली आप इसमें देखो, इट्स नॉट अबाउट कि वो 100% काम कर रहा है या 20% काम कर रहा है. इट्स अबाउट उसको 100% इनकम मिल रही थी पहले वाली या 20% इनकम मिल रही है पहले वाली. तो कॉन्सेप्ट इज नॉट अबाउट वो कितना काम कर रहा है. कॉन्सेप्ट इज अबाउट कि उसको पार्ट टाइम पैसे कितने मिल रहे हैं. पहले अगर उसको 100% उसकी तनख्वाह थी, इफ हिज सैलरी वाज 100%, इफ सही. ही इज रिसीविंग ऑन पार्ट टाइम बेसिस, चाहे वो 1 घंटे में उसको दे रहे हैं या 5 घंटे में दे रहे हैं, आई डोंट नो, बट इफ ही इज रिसीविंग 80% ऑफ दैट प्रीवियस इनकम, देन कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. इफ नहीं, ही इज लेकिन रिसीविंग ओनली 20% सैलरी, नहीं तो नहीं उसको देखिए 100% असद, बेनिफिट अगर मिलेगा. अगर इतना ऐसा होगा तो बेहतर नहीं होगा? फिर जैसे मैं अपना फॉर एग्जांपल मी, इफ यहाँ. अगर मैं कहूंगी कि भाई अगर मुझे इतने पे होगा तो मैं कहूंगी कि मैं जाऊं ही नहीं काम पे फिर, हम्म. क्योंकि फिर मैं तो मतलब इतना भी थोड़ा भी लेके मुझे क्या फायदा. तो मैं ये सोचूंगी कि मैं फुली डिसेबल रहूं ताकि मैं पूरा बेनिफिट ले लूं, और फिर उसके बाद जब जो एक सर्टेन टाइम हो, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग लाइक एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मैं अगर सोचूं कि नहीं मैं तो जाऊं ही नहीं, फिर मैं पार्ट टाइम भी क्यों करूं, हाँ राइट? जी किरण, तो उसके लिए दैट्स हम एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. उसमें क्या होता है, मेजोरिटी लोग तो यही करेंगे, व्हाई वुड दे बॉदर, दे वोंट गो. इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है साफ साफ, दिस रेजिडुअल बेनिफिट is there to encourage का वर्ड आया है, encourage disabled people to go back to work, क्योंकि कंट्री तो चाहता है ना कि लोग अगर फिजिकली काम कर सकते हैं, they should go back to work. But ideally practically point of view से what you are saying is 100% right. लोग जाते ही नहीं है. But I tell you one thing, आपको disability के benefit जो मिलते हैं, let's say you are entitled to $5,000 per month of disability benefit.
राइट, और आपके पास 2 साल का डिसेबिलिटी बेनिफिट टेन्योर है, टोटल बेनिफिट कितना मिलेगा आपको? 5,000 एक महीने मिला, साल का कितना हो गया? 60,000, 12 5 12 5 are 60,000, next year 60,000, so you are gonna get $120,000 in 2 years. In residual disability, let's say if you get some amount from your part-time job and remaining from your benefit, then you keep getting the benefit for more number of months until you reach 220,000. So वो benefit देते हैं वो, आप 120,000 जब यूज कर लोगे तो आपका बेनिफिट पीरियड तो खत्म हो गया, नाउ यू आर नॉट गोना गेट प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर आप बीच में पार्ट टाइम जॉब पे जाना शुरू कर दिया था आपने, तो जो डिसेबिलिटी की इनकम कम हुई ना, वो आपके बेनिफिट में तो अभी भी पड़ी है ना, सो यू कैन कीप एक्सटेंड दैट बेनिफिट। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है दैट इनकरेजेस पीपल दैट दे शुड गो बैक टू वर्क। साउंड गुड? Everybody is with me? This was an important question asked by Kiran. But yes, why would people go back to work? Is only they want to save their benefit period. If they are receiving some money from employer, that means that amount they are receiving, they are taking less from their disability. That will keep their disability run for longer time. If they were supposed to be injured again, or they want to continue working part time, they want disability to keep paying as many months as it can, right? That is where it is important. Now, कट ऑफ पॉइंट्स क्या बताए? अगर 20% पार्ट टाइम इनकम है तो हाउ मच डिसेबिलिटी बेनिफिट यू विल गेट? 100%. 100%. अगर 80% पार्ट टाइम सैलरी मिलना शुरू हो गई है, हाउ मच बेनिफिट यू विल गेट? 0. 0. अगर इसके बीच में है तो फिर क्या होगा? We have to calculate कोई Then we have to formula. calculate. अब उसका फॉर्मूला बताने लगा, वो 3 स्टेप फॉर्मूला है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, you need to first of all calculate the percentage of income lost. That is the first step. Percentage of income lost. How did you calculate that? तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? Let's say before disability income थी 100,000. After, so write down the formula: pre-disability income minus part-time income divide by pre-disability income is equal to percentage of income lost. All right. So I'm repeating: pre-disability income minus part-time income divided by pre-disability income is equal to percentage of income lost. अभी मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं, आपने मुझे परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस निकाल के बतानी है सर सबने। भाई जरा स्लो स्लो जरा दोबारा बोलिएगा। प्री डिसेबिलिटी इनकम, प्री डिसेबिलिटी इनकम माइनस पार्ट टाइम इनकम, जो वो बंदा अब पार्ट टाइम बना रहा है सैलरी, डिवाइडेड बाय प्री डिसेबिलिटी इनकम। वो उसको दोबारा डिवाइड प्री डिसेबिलिटी जी इनकम से जी करना। जी जी जी, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस्ट। ये पहला स्टेप है जो हम रेजिडुअल कैलकुलेट इक्वल करने टू के लिए कर रहे हैं। इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस्ट। इक्वल टू परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस्ट। इनकम लॉस्ट। लॉस्ट, ये यही निकालना चाह रहे हैं ना। फर्स्ट स्टेप में हम यही जानना चाह रहे हैं कि इसकी पार्ट टाइम जॉब पे जाने के बाद कितनी परसेंट इनकम लॉस्ट हुई है, वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस फॉर्मूला से। ओके। अभी मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, सभी ने वैल्यूज पुट करनी है और मुझे बताना है कि परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस कितनी है। मेरी प्री डिसेबिलिटी इनकम वाज 60,000, माय पार्ट टाइम इनकम इज 24,000। टेल मी हाउ मच परसेंटेज ऑफ माय इनकम इज लॉस्ट? राइट डाउन इन कमेंट। अच्छा 60,000 बताई थी ना आपने प्री डिसेबिलिटी? 60,000 पे डिसेबिलिटी, 24 इज माय पार्ट टाइम इनकम। जो भी नंबर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई द नंबर विद 100 टू गेट अ परसेंटेज। 60%. 60% इज द राइट आंसर। अगर किसी का 60% नहीं आ रहा तो अभी अपने आप को क्लियर करो, बाद में आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड अंटिल यू आर नॉट एबल टू गेट 60%। हु इज नॉट एबल टू गेट 60%? राइट,
Kiran is done. Mehreen is done. Kumkum is done. Jaya, are you able to get 60%? Awesome. Saad, are you able to get 60% or not? या असद भाई आई डिवाइड 60,000 को मैंने 36,000 से डिवाइड किया What? क्यों किया ऐसा? So क्योंकि let's say 60,000. साथ do it with me. Calculator पे 60,000 लिखो minus 60,000 24,000. माइनस 24,000 पहले इक्वल टू दबा दो, इज इक्वल टू 36,000, राइट? अब डिवाइड का साइन दबाओ, डिवाइडेड बाय 60,000, so you will get 0.6. The 0.6 you get, you need to convert it into क्या percentage. Multiply that by 0.6 100, so you'll get 60%. I want 0.6 everybody to do this calculation and be absolutely right. कल को आप गलत कर दोगे सवाल अगर यही नहीं सही करोगे तो। आ गया उस्मान भाई? या 0.6 उस्मान भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही, अनम्यूट। असद आ भाई गया। असद भाई मैंने किया 60,000 माइनस 24,000 डिवाइड बाय 60,000। डिवाइड बाय 60,000 अगेन। भाई वो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया, प्री डिसेबिलिटी इनकम माइनस पार्ट टाइम इनकम डिवाइड बाय प्री डिसेबिलिटी, तो जो प्री डिसेबिलिटी की इनकम है वही डालोगे ना। 59,999.6 ऐसे आ रहा है। फिर उसको उसका परसेंटेज बस दबा दूं। कैसे, मैं समझा नहीं, आपने क्या किया है? आप प्री डिसेबिलिटी इनकम क्या बताई मैंने आपको? 60,000 60,000 माइनस माइनस पार्ट टाइम इनकम कितनी बताई मैंने आपको? 24,000। 24। तो ये कितना आया आंसर? 36,000। यस। अब इसको डिवाइड करो 36,000 को 60,000 से जो प्री डिसेबिलिटी इनकम है, तो क्या आंसर आ रहा है? 0.6। हाँ, तो उसको 100 से जरब दो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 60। 60%। तो दैट मीन्स मेरी इस एग्जांपल में परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस वाज हाउ मच? 60%। दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट रेसिडुअल बेनिफिट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सेकंड स्टेप। रेडी? एक मिनट असद भाई, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। स्वान भाई क्या कंफ्यूजन है? मैं एक सेकंड एक दफा दोबारा कर लूं? हाँ हाँ श्योर, आप कर लेना, बट इसमें कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ क्या कंफ्यूजन ठीक है। है, आप अपना कंटिन्यू रखें। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा। आर यू डन? जी ठीक है। ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो, मैं आपको भेजूंगा, तो बाद में इंडिविजुअली विल स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट, बट राइट नाउ लेट्स बी विद मी ऑन द सेकंड स्टेप। आफ्टर द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज वी नीड टू फाइंड आउट रेसिडुअल बेनिफिट। दैट्स द सेकंड स्टेप। हाउ डू यू फाइंड आउट रेसिडुअल बेनिफिट? देयर इज अ फॉर्मूला। टेक द फुल बेनिफिट दिस पर्सन वाज गेटिंग बिफोर, multiply that with percentage of income lost. Now in the same example I was telling you, so Usman bhai, write down full benefit multiply by percentage of income loss. Percentage of income loss क्या है जो हमने step 1 से find out किया आंसर? That is the percentage of income loss from step 1. Multiply that with full disability benefit that person was getting. Let's say मैंने question में लिखा हुआ है that I am getting 5,000 a month as full benefit. So what is my residual benefit now? Who can tell me? ये जो आपने फॉर्मूला बताया है ये फुल बेनिफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस है। Yes, my full benefit. So yes, the formula is full benefit multiply percentage of income lost. Okay, so my full benefit was 5,000 a month. Now tell me what is my residual benefit? तो फुल बेनिफिट कितने में? 5,000 a month थे। आपने महीने में मुझे बताना है what is my monthly residual benefit. तो इसको परसेंटेज जो निकालनी है वो किससे निकालनी है हम लोगों ने? तो उसका सेकंड अमाउंट क्या होगा? So देखो फॉर्मूला में सेकंड अमाउंट है परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस्ट। ये आपने पहले स्टेप में निकाला है ना अभी 60%। अच्छा, तो वो करो ना, 5,000 को मल्टीप्लाई करो 60% से। ये 300,000 आ रहा है। 300,000 आ गया। 3,000 आना चाहिए, 300 नहीं। हैं?
नहीं 5000 को हम 16.6 क्या हो गया गाइस आपको? 5000 को ओके अगर हम सॉरी 60 से करेंगे तो राइट, इट्स 5000 का 60% 300,000 नहीं हो सकता कभी भी, इट्स गोना बी 3000. स्वान भाई, आर हाँ यू विद मी? 3000 को 3000 नहीं तो वो 60,000 से करेंगे। नहीं 0.6 60%, आप देखें वहां लिखा क्या है, परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस्ट. आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि ये जो फॉर्मूले के अंदर चीजें लिखी हैं वही प्लग इन करनी है ना. फुल बेनिफिट है 5,000 पर मंथ. परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस क्या है जो आपने स्टेप्स 1 से निकाला है, परसेंटेज 60%, बस निकाल लो 5,000 का 60%. इसमें क्या बड़ी रॉकेट साइंस है? असद भाई, ये लोग सब कहाँ से देख रहे हैं? कहीं से भी नहीं देख रहे, जो मैं बता रहा हूँ वो लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सारे. आप भी कर लो, लिख लो थोड़ा बहुत. 3000 आया। 3,000 राइट. 0.6। चलो ऑल राइट. आप कब से ये फाइंड आउट कर रहे हो कि ये लोग कहाँ से देख रहे हैं? गुड है मीरा. तो मुझे नहीं पेपर पे समझ आ लिखो. रहा, पता नहीं कहाँ से ये लोग नहीं दिख रहे हैं। आपने कहा कि वहां पे देखो कहाँ लिखा हुआ है, तुमने कहा कहाँ लिखा हुआ है? अभी ना वो असद भाई ने हमें नोट्स दिए हुए हैं उसमें से देख रहे हैं हम, वैल्यूज लिखी हुई हैं उसमें। नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई साहब नोट ऐसे नहीं कह रहे है, हैं. ये क्या है, ये फेक पूल का नोट्स, अगर आप कैलकुलेटर है और लिखोगे ये तो हम हाँ. पेपर पे लिख रहे हैं। टेक योर पेपर एंड पेन, सिट डाउन, उस पे लिखो ये फॉर्मूला, तभी तो प्रैक्टिस करोगे. सो गाइस, एवरीबॉडी इज गुड विद स्टेप 2. क्या आंसर आया? 3,000. हम्म, तो 3,000 हो गया रेजिडुअल बेनिफिट. अब थर्ड स्टेप पे वो पूछेगा आपसे कि इस बंदे की इनकम बताओ, जो इसको पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ अब जो टोटल इनकम इसको घर पे लेके जा रहा है या महीने की, वो कितनी है. तो कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला है रेजिडुअल बेनिफिट जो निकाले थे आपने, प्लस जो पार्ट टाइम इनकम उसकी अर्न हो रही है उसको जमा कर दो, तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी इस बंदे की. सो रेजिडुअल बेनिफिट प्लस पार्ट टाइम इनकम अर्नड इज इक्वल टू टोटल इनकम ही इज रिसीविंग. 27,000 27,000. बिकॉज पार्ट टाइम इनकम 24,000 थी और रेजिडुअल 3,000 है। तो यहाँ पे देखो गलती हो रही है, वो 24,000 तो वो साल के बना रहा था, उसको मंथ में कन्वर्ट नहीं करना उसको. ये 3,000 तो ओके मंथली था जो अभी निकाला है. दैट्स वेयर पीपल 50। विल मेक प्रॉब्लम. सो 24 की मंथली इनकम क्या होगी? 2,000. So यस 2,000 plus 3,000. So now his monthly 5 benefit is 5,000. Sounds good? You get an idea? नहीं नहीं, असद भाई नहीं समझ आया बिल्कुल भी। आप कहाँ तक पहुंचे हो? थर्ड स्टेप पे हो. हाँ, वो उधर ही आप ही के साथ हूँ, मैं थर्ड स्टेप तो पे ही हूँ। थर्ड स्टेप पे आपने रेजिडुअल बेनिफिट में क्या लिखा है अभी जो निकाले थे स्टेप 2 में? 3,000. 3,000 निकाल लेना। पार्ट टाइम इनकम ये बंदा कितनी बना रहा था? 24,000 साल की. जी 24,000। तो मंथ की कितनी हो गई? 2. 24 को डिवाइड करो 12 पे, 2,000 हो गई. हाँ 2,000 हो गई। तो 2,000 प्लस 3,000 वहां से मिल रहे हैं, तो टोटल 5,000 बनाएगा ये. समझ नहीं में तो आ गया? नहीं तो वो क्या कहते हैं, हम लोग उसको ही आपस में मैच करेंगे, यानी जो 24,000 है उसकी इनकम को वो डिवाइड करके उसके बाद जो 3,000 निकला हुआ उसको प्लस करेंगे उसके अंदर, वो वो डिपेंड करता है 5,000 हो उस जाएगी। क्वेश्चन के ऊपर. अगर वो कह रहा है कि एनुअल इनकम बताओ, तो फिर आप 3,000 को एनुअल में कन्वर्ट करोगे. अगर वो कह रहा है मंथली इनकम बताओ, तो आप 24,000 को डिवाइड करोगे 12 पे. आपने एक ही यूनिट रखनी है ना. आप ऐसा नहीं कर सकते कि रेजिडुअल बेनिफिट मंथली ले लो और उसमें दूसरे वाले बेनिफिट एनुअल जमा कर लो, तो वो तो उसकी यूनिट ही खराब हो गए ना. तो यू हैव टू डू इन द सेम यूनिट. इफ ही इज आस्किंग यू टेल मी एनुअल, तो देन कन्वर्ट 3,000 इनटू एनुअल बाय मल्टीप्लाइंग विद 12 ठीक प्लस है। 24. ओके। राइट, समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आप जो बोल रहे रेजिडुअल डिसेबिलिटी बेनिफिट. इसका स्पेलिंग करेंगे? RESI RESI। DUAL. रेजिडुअल ओके। डिसेबिलिटी बेनिफिट. ठीक है, ऑल ओके। गुड. ओके। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? सो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं सबको. ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है और आपने जो है ना इसका आंसर निकाल के मुझे देना है. ठीक हो गया? या फिर अगर आप कहो तो मैं बोल के क्वेश्चन बताऊंगा. आई वॉन्ट दी आंसर्स. हाउ डू यू प्रेफर, बोल के बताऊं? ओके, एवरीबॉडी रेडी? बोल के बता, बोल के। All right. So here's the question. Carol's pre-disability active income is $100,000. Pre-disability income, active income. Carol has been receiving a total disability benefit of 60%.
that means 60,000 per year, which is also 5,000 per month. Okay, if she returns to work and make 80,000, असद भाई इसको लिख दो तो ज्यादा बेहतर है यार। एक मिनट रुको, फिर लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? ये वाला क्वेश्चन है जो एग्जांपल लिखा है। आई वांट द आंसर फॉर दिस। आंसर भी आ ओके। ये रिपीट हुआ हुआ है सेम ही, वो जो पहला पैराग्राफ है उसने दोबारा रिपीट किया हुआ है, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नीचे है, शी रिटर्न्स टू वर्क पार्ट टाइम एंड अर्न्स 2,000 पर मंथ और 24,000 पर ईयर, हाउ मच शी विल रिसीव फ्रॉम हर डिसेबिलिटी इनकम, टोटल इनकम वो पूछ रहा है। ये वो तीनों स्टेप जो मैंने बताए हैं वही प्लग इन करने हैं। यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल इनकम मंथली शी इज गेटिंग। वेरी गुड कुमकुम, यू आर स्पॉट ऑन, फैंटास्टिक। एवरीबडी शुड गेट द आंसर, अदरवाइज मैं आगे जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये आप नहीं समझोगे तो आप गलत करते रहोगे, फिर फेल होते रहोगे। गुड जॉब कुमकुम, ब्रिलियंट। सिंपल है, वैल्यूज यहाँ से निकालें क्वेश्चन में से, वो जो मैंने फॉर्मूलाज दिए हैं, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट इट डन। किस किस का आंसर निकल आया है कुमकुम के अलावा? मेहरीन, आप कहाँ तक पहुंचे हो? आंसर इज गुड, यू गॉट द आंसर, यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? Yeah. उस्मान भाई, आप कहाँ तक पहुंचे हैं, किस स्टेप तक आए हैं? मल्टीप्लाई में फंसा हूँ। क्या मतलब मल्टीपल में कैसे पता? कैलकुलेटर, ये देखो, ये कैलकुलेटर है ना, इस पे करो ना, फंसे क्यों हो? कौन से स्टेप पे हो? आपने परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस निकाल लिया? नहीं अभी नहीं निकाला। कैसे नहीं निकाला? फॉर्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस का? उसका फार्मूला यही है ना, 100,000 को डिवाइड करना है उसके साथ जो उसकी इनकम लॉस इनकम है 60,000 के साथ। नहीं नहीं, फॉर्मूला क्या है? स्टेप स्टेप वन था परसेंटेज ऑफ लॉस इनकम का फॉर्मूला क्या है? प्री डिसेबिलिटी प्री इनकम डिसेबिलिटी इनकम माइनस माइनस पार्ट पार्ट टाइम टाइम इनकम डिवाइडेड बाय प्री डिसेबिलिटी इनकम। हाँ, बस यहीं पे रुको। अभी फॉर्मूला में से, ये क्वेश्चन में से इसकी वैल्यू पुट करो। इसमें प्री डिसेबिलिटी इनकम की क्या वैल्यू है, कितनी कमाती थी वो? 100,000। हाँ, तो लिखो 100,000 माइनस उसकी पार्ट टाइम इनकम कितनी है जो उसने आखिरी लाइन में बताई है। मैं अच्छा माइनस पार्ट टाइम इनकम कितनी है उसकी? ये रही, ये 20,000। 24,000, ये रही, ये लिखी है। ये दो है या ऊपर भी तो है ना 20,000 लिखा हुआ? सर ये रिपीटिशन हो रही है, ये 3 लाइनें जो ये लिखी हैं वही 3 लाइनें उसने गलती से दोबारा लिख दी हैं, इसको इग्नोर कर दें। अच्छा ऊपर वाले को नहीं करना? ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है कि शी रिटर्न्स टू वर्क पार्ट टाइम एंड अर्न्स 2,000 पर मंथ और 24,000 पर ईयर,
तो ये इसकी पार्ट टाइम इनकम है। 100,000 में से निकालो इसको माइनस करके 24,000 को। क्या आंसर आता है? 76,000। हाँ, डिवाइड करो उसको प्री डिसेबिलिटी इनकम से, वो है 100,000, तो 76% आ गया आंसर। डिवाइडेड हम जो करेंगे जो 60% से करेंगे ना। सर आप फॉर्मूला क्यों नहीं देख रहे? फॉर्मूला में नीचे बट क्या लिखा है, क्या लिखा है वहां पे? प्री डिसेबिलिटी इनकम लिखा है, तो आप बढ़त क्यों नहीं रहे उसको? क्लियर है? निकला है 76%। हाँ 76 निकला है, गुड। 0.76। अब ये स्टेप 1 डन हो गया है, तो 0.76 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 76%। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये स्टेप 1 लिखा हुआ है, ये मैंने ब्लू किया है इसको, ये यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब स्टेप 2 पे आना है। स्टेप 2 पे हमने क्या निकालना है? रेजिडुअल बेनिफिट। व्हाट इज द रेजिडुअल बेनिफिट? सो रेजिडुअल बेनिफिट का फॉर्मूला कौन बताएगा? दिस इज द फॉर्मूला, ये मैंने ब्लू कर दिया। फुल बेनिफिट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इनकम लॉस्ट। परसेंटेज इनकम लॉस क्या निकाली थी हमने यहां से? 76%, 6। ये रही। और फुल, ये क्या है? फुल बेनिफिट। फुल बेनिफिट कितने मिल रहे थे उसको? वापस क्वेश्चन पे आए, ये देखें, ये लिखा कि कैरल को 60% ये फुल बेनिफिट मिल रहे थे। फुल बेनिफिट मंथली कितने थे? 5,000। $5,000। तो इस फॉर्मूला में देखो लगा दो, फुल बेनिफिट की जगह 5,000 और परसेंटेज ऑफ इनकम लॉस जो हुई है इसकी जगह, इसमें जो हमने ये निकाला था पहले स्टेप में वो लिख दो, तो आपको रेजिडुअल बेनिफिट का नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यूज ही डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक। ठीक है, निकल आया ये। अब एंड में वो कहता है कि भाई अब टोटल इनकम ये कितनी रिसीव कर रही है, तो ये है स्टेप 3। अब आप देख लो इसका फॉर्मूला क्या है? रेजिडुअल बेनिफिट, ये कितने निकल के आए थे? ये रहे, ये रेजिडुअल बेनिफिट निकाले थे हमने, प्लस उसकी इनकम अर्न जो पार्ट टाइम मंथली क्या कर रही है, ये लिखा कि शी इज अर्निंग 2,000 पर मंथ। तो 2,000 में 3800 ऐड कर दो, तो अभी उसकी न्यू इनकम कितनी है? 5800, $5,800। क्लियर है? और अगर वो जॉब पे ना जाती तो कितनी इनकम उसको मिलती रहती? 5,000। 5,000। अभी उसका $800 का बेनिफिट हो गया, राइट। सो इस तरह से आपको रेजिडुअल इनकम, रेजिडुअल बेनिफिट और टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होगी। एंड आई डोंट वांट दैट यू डू एनी रॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज ही प्लग इन करनी है। क्लियर है जी? Anybody has any question about what I discussed? Jaya, you have any question? You clear? Good. Saad, you're good. Kiranji, you're good. Okay. All right. This is a very important concept. You need to know that. Next is partial disability benefit. We discussed the residual. Partial disability benefit are very similar to residual, but you don't have to calculate this. It's simply the discretion of insurance company that if you go back to work and you tell them that, hey, I'm working, but I'm not able to work full time, they will give you some kind of partial disability benefit. This is known as partial disability benefit. What you need to know about this is no formula is there. It's total discretion of the company how much partial benefit they want to give you. Okay. So partial disability benefits are paid by insurance contract from the beginning of disability. एक और चीज जो इसमें नोट करने वाली है, it is paid from the beginning of disability. That means from 0 day beginning. Residual benefits are normally paid after 6 months of disability when somebody gets back to work. Okay, so residual benefits gets paid to you after 6 months, but partial disability benefit are paid to you from beginning of disability. Sounds good? Anyone has any question about this? All right, Swan bhai, you're good.
So Okay. can you please repeat this one just one more time, please? Okay, so two concepts, partial disability benefit and residual disability benefit. So I said to you, in residual disability benefit, normally benefits start after 6 months of disability. Somebody, somebody's returning back to work. So minimum time gap is, let's say, 6 months, the person was disabled. Now they went back to work part-time. So you have to calculate through the method that I told you. But in partial disability, it is about from the beginning of the disability contract. If somebody is disabled, not severely, but they're able to do some of their job responsibilities from beginning, then they are receiving partial income from that few little work they're able to do, and then they also get partial disability benefit, but normally from the beginning, because in here person is not fully disabled, he's able to do some kind of job responsibilities with his disability. Sounds good? This is partial disability benefit. Clear hai? Okay. Now, next one is, the next rider is return of premium, ROP, return of premium rider. Very, very important rider. You know why you add this rider? As the name is suggesting, return of premium. Now, I am paying into my disability insurance every month, every month, every month. Let's say I keep paying until 65, but I never become disabled. Now what's going to happen? What the money that I was putting every month, that is being lost now. So sometime people want to add an extra topping that is known as return of premium rider. That if nothing happens to me until age 65, I get my 70% of the premiums that I'm putting, I need that back. And company pays you how much back? 70%. What is the cutoff? 70% of the premium that you have paid. If you don't get disabled until 65 and you have that rider option on your plan, you get 70% of the premium back. Sound good? This is return of premium rider. Now, two important things you need to know about this. Make a note of that. Number one, that you need to know, if between that until the age of 65 you did file some claim, company paid you some claim, the benefit company paid you will be subtracted from your 70% return of premium. Okay, so you need to make sure if the company paid any claim to you. If they paid claim, then from the 70% return of premium option that you will be getting, first company will settle the claim that they paid you, and remaining amount they will give you. My question to you, Jaya, is if the claim amount was more than the 70% of premium amount, would I get something back even though I had this rider? No. No, gone. Clear? So it is calculated with how much claim. So first you need to calculate 70% of the total premium minus any claims company paid to you. If no claim paid, you get 70%. If they paid some claim, 70% minus that claim amount that you will get. But if your claim are more than 70%, then you will get nothing. ठीक है उस्मान भाई, ये राइडर क्लियर है? क्वेश्चन आना है इसमें से इज ऑसम. ओके, नेक्स्ट राइडर इज रेटिंग्स एंड एक्सक्लूजन राइडर. दिस इज सिंपल, इसमें कोई खास समझने की बात नहीं है. इफ कंपनी इज इशूइंग यू अ प्लान विच इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्लान, that means this is not for a healthy person, but a rated plan company is issuing you. That means you have a diagnosis that company feel that they cannot give you the plan rate that they can give to a healthy person. They want to approve you, but on a higher premium. This is known as rating plan. Your plan is now rated. Why? Because insurance company feel that you have some underlying health problem and they cannot give you the standard rate. Now they give you rating plan. In rating plan, sometimes companies approve you. Let's say I already filed for a disability. In my history, doctor has this, that Asad got disabled for 2 months with a back injury. And I never had a disability insurance for me. But in my medical information bureau, MIB, this is reported that Asad has a disability reported. Doctor reported this. Now, if I'm applying for this insurance, and they can get that data from my MIB, they get to know Asad is already having a back problem. So they can write an exclusion in my contract. They will approve me, but they will say if any disability come because of your back pain, we will not pay any claim. But any disability that comes outside back pain, we will give you the claim. That is known as writing an exclusion in the policy. That means pre-existing scenarios are not covered.
that is an exclusion. That okay, whatever has happened to you before, if you get disabled because of that very reason, we won't cover you. We're writing an exclusion in the policy. But anything new disability happens to you, we will protect you. This is known as exclusion. Okay. तो वो डिनाई नहीं करते, डिक्लाइन नहीं करते, एक्सक्लूजन डाल देते हैं कि भाई आप अगर इस वजह से बीमार हो गए तो फिर नहीं पे करेंगे, इसके अलावा किसी वजह से बीमार हुए हो, डिसेबल हुए तो पे कर देंगे. साउंड्स गुड? उस्मान भाई, आर यू गुड? Okay, so now let's go on to the next rider, which is hospitalization benefit. Leave it, इसमें कुछ खास नहीं है. हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट ये है कि अगर आप डिसेबल हो गए हो और डिसेबिलिटी ऐसी है कि आपको हॉस्पिटल में कमरा खरीदना पड़ रहा है रात को, यू नीड टू रेंट अ रूम इन द हॉस्पिटल, charges are probably way higher than what your health card is covering. Then if you have this rider of hospitalization benefit, the insurance company will pay extra money to cover your hospital bed in a private room, which is like whatever amount your health card is not covering. In a health card, you are normally protected for a ward room. They give you a room in the ward. But if you want a private room in the hospital, of course, that comes with a lot of money. So if you have the hospitalization benefit rider on your policy, now you will be staying in a private room, not in a ward with other patient. Sounds good? That is the hospitalization rider. You can add this as a topping on your pizza. Any question? All right. So the next topic, and a very important topic, इसमें कोई गलती नहीं करना. I will spend my time, but you need to make sure that you understand the concept. This is a very important concept. It's about taxation of disability benefits. All right, Mehreen, are you with me? Kumkum, are you with me? I want everybody to be with me, because tomorrow, please don't ask me question. ये आंसर कैसे गलत हो गया सवाल का अगर उसने टैक्सेस से कुछ पूछ लिया तो. आई एम गोना गिव यू एन आइडिया एज अ रूल ऑफ थंब. इसको प्रैक्टिस भी करेंगे और राइट डाउन करेंगे. देखें, सिंपल सी बात है. अगर पैसे अपने प्लान के मैं खुद जेब से पे कर रहा हूं तो बेनिफिट जो मुझे आएंगे वो टैक्स फ्री होंगे. सिंपल एज दैट. अगर प्लान के पैसे मेरी पॉकेट से जाते हैं, मेरी जेब से जाते हैं, मेरे बैंक अकाउंट से जाते हैं या मेरी सैलरी से जाते हैं, तो जो बेनिफिट आएंगे डिसेबिलिटी के वो क्या होंगे? टैक्स फ्री. ओके. बट अगर ये डिसेबिलिटी के पैसे मेरी पॉकेट से नहीं जाते हैं, ये मेरा एम्प्लॉयर पे करता है या कोई ग्रुप का बंदा पे करता है या कोई थर्ड पर्सन मेरे बिहाफ पे करता है, तो जो बेनिफिट मुझे मिलेंगे वो टैक्स फ्री नहीं होंगे, वो टैक्सेबल होंगे. सिंपल. क्या इसमें हम गलती तो नहीं करेंगे इस कॉन्सेप्ट में? राइट. सो किरण, आई आस्क यू अ क्वेश्चन. अगर पैसे अपने इंश्योरेंस प्लान के मैं खुद पे कर रहा हूं तो द बेनिफिट दैट आई एम गेटिंग, दैट वुड बी टैक्स फ्री. free. Very good. जी. Jaya, if I'm not paying anything from my pocket, my employer is paying for my disability plan and I get disabled, the benefit that I'm getting are Taxable. taxable. Brilliant. Please don't make mistake. Now let's get into a situation which is a mix of both. Now I'm going to give you an example of a group disability plan, where I was paying 50% and my employer was paying 50%. Now I get disabled and I'm getting benefit. Now who can tell me what's going to happen? जो हम अपने पॉकेट से देंगे उस पे टैक्स नहीं होगा. जो एम्प्लॉयर के उससे जितना बेनिफिट होगा 50% वो टैक्सेबल होगा. Fantastic, Mehreen. Simple as that. You understood that. लेकिन how would you calculate कि आपने अपनी पॉकेट से कितना डाला है? How would you get to know how much you paid from your pocket, that which is tax free? वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा कि आप कितना परसेंट दे रहे हो और एम्प्लॉयर कितना परसेंट दे रहा है. अगर वो आप 30% दे रहे हो तो आपका 30% जो है वो टैक्सेबल नहीं है और 70% है क्योंकि एम्प्लॉयर 70% दे रहा है. अगेन अगर आप 70% जो है अपने पॉकेट से दे रहे हो, 30% एम्प्लॉयर दे रहा है, तो फिर आपका 70% जो है वो टैक्सेबल नहीं है और 30% जो है वो टैक्सेबल है. Fantastic, Mehreen. And how do you get to know all this? You will be getting this information in the question. They will tell you in the question that, okay, this much monthly employer was putting, this much monthly employee was putting. Now the plan was in force for 10 years and now the employee get disabled. So you have to calculate
how much money he paid in those 10 years, right? How much money he paid in those 10 years is what his contribution is, right? Get a percentage out from that. I will give you an example with this. Wait. Okay. So let's say example is I used to pay $10 every month into my disability plan. $10 every month. To my employer. And my employer was forget about what he was putting. Forget about what he was putting, right? I was putting how much? $10 a month. And now my plan is in force for 10 years. Can you tell me how much total money I paid? First of all, give me this answer. How much total money I have paid in last 10 years? Because my plan is active or in force since last 10 years. How much monthly I'm paying off to my employer? $10 a month. Tell me how much total I paid. Very good, Kumkum. Simple maths. 1200. 1200. How? Because $10 a month times 12 month in a year is 120 a year. And then 10 years my plan is in force. So in 10 years, I contributed how much? 1200. Now, if I'm receiving 5,000 monthly benefit when I get disabled, how much is taxable, tax free for me? 1200 is tax free for me, right? And remaining, my employer was contributing, so remaining money is taxable. Are you guys clear with this? How to calculate what amount is tax free, what is taxable? Swan, are you clear? I went very slow, simple concept. So you need to know the taxation of the contract. If you pay everything from your pocket, 100% tax free. If your employer pay everything from his pocket, 100% taxable. If it's a mix of both, you need to calculate how much total you paid. That minus that portion, that will be tax free that you paid from your pocket. Remaining will be taxable. So this is the end of taxation. Now I want to see anything else. Okay, there is one more concept that you need to know. Don't get confused. It's the same concept. Let's say if I am paying from my pocket 100%, the benefit that I get is what? Tax free. Clear? I want to show you the other side of this mirror. Now, how my taxation is being treated. The money that I paid from my pocket, can I discount it from annual, the time when I'm going to file taxes? Can I discount that to take a tax credit back? So that means it's non-tax deductible. ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने जो पैसे जेब से पे किए हैं मैं कल को टैक्स फाइल करते हुए उसको अपने अकाउंटेंट से कह के कटवा भी लूं उसमें से. ऐसा नहीं कर सकता मैं. सो द मनी दैट आई पेड फ्रॉम माय पॉकेट इज नॉन टैक्स डिडक्टेबल एंड द बेनिफिट दैट आई विल रिसीव इज टैक्स फ्री. एक ही चीज हो सकती है. इफ आई एम deducting that as an expense from my annual taxes, then the benefit will become taxable. Sounds good? So you have to think about this like in this way. If I'm paying from my pocket $100 a month for my plan, I cannot discount that $100 from annual taxes because that money is non-tax deductible. Only then my benefit remain tax free. But if I do this tax deductible $100, then my benefit will become taxable. Clear? So I cannot discount that in taxes. Anybody confused? Not clear? Raise your hand. Okay, Jaya is not clear. All right. Swan Bhai is not clear as well. Okay, first I'm gonna go in English, then I will come in Urdu. So Jaya, the question is like this. I'm gonna involve you. Let's say Jaya, I own $100 policy a month, disability. I pay premium from my pocket, my bank account. You know, so how much annually I paid? 1200. Okay, let's say I get disabled. The benefit that I receive are tax. Unmute yourself. Sorry, tax free.
the benefit that I will get it tax free. Okay, that is one side of the mirror. I want to now ask you how you're reporting this 1200 to the accountant. Now I'm asking the second part, because I want to know how did you report it to your accountant. If you are showing this $1,200 as expense, then we call this technical terminologies, you are showing this tax deductible, because you're showing this as expense. So that will become now tax deductible, right? If you do this, then the benefit will not be tax free anymore for you. Sounds good? Okay. You cannot take advantage on both front. You cannot take a refund back from tax while filing tax, and you cannot also keep getting the benefit tax free. It's Right. either or. So that is what I mean to say. Is it clear? Yes. उस्मान भाई, आप वीडियो ऑन करें, अब मैं आपको बताने लगा हूं उर्दू में सेम कॉन्सेप्ट. आपको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट जो मैंने जाया को बताया? आप मुझे थोड़ा बता सकते हो अनम्यूट करके, क्या समझ में आया? आपने जो उसको इंग्लिश में बोला वो मैं ऑलरेडी समझ गया हूँ. तो उर्दू में बता दो मुझे क्या बोला है. वो मैं वो कि कौन बताएगा मुझे? अगर हमने वो एक्सपेंस में डाला है बेसिकली, ठीक है, अकाउंटेंट को, तो वो टैक्स डिडक्टेबल में आ जाएगा. हम उसको वहां पे टैक्स डिडक्ट करवाएंगे. शो करवा रहे राइट. हैं. हाँ. क्यों? ताकि हम जो जिस वक्त बेनिफिट लें तो वो टैक्स फ्री हो सके. अगर हमने उसको एक्सपेंस में नहीं दिखाया, उल्टा कर दियो, आप उल्टा कर रहे हो. उल्टा कर दी. हाँ हाँ. अगर आप टैक्स डिडक्टेबल शो करवाओगे अकाउंटेंट को तो बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा. ओके. अगर आप नॉन टैक्स डिडक्टेबल शो करवाओगे तो बेनिफिट टैक्स फ्री रहेगा. ओके. ठीक है, सही. समझ में आ गया? ये नाम अजीबो गरीब हैं, थोड़े से उल्टे सीधे नाम है, बट आपको ये याद करने ही होंगे क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा वो. आई कैन नॉट हेल्प इट. मैंने आपको सादा लफ्जों में यही बता दिया है कि आप इस तरह से याद रख लो उसको. ये इसकी टैक्स ट्रीटमेंट कहते हैं इसको. दिस इज द टैक्सेशन ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस. ठीक है साद, क्वेश्चन करूं तुमसे, रेडी हो? असद भाई, ये जो आप क्वेश्चन आप बता रहे हैं ये ऑलरेडी इसके अंदर बुक में भी है या? हाँ, या बुक में रीड कर सकते हो. व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू कैन गो, आई कैन शो यू वेयर द स्टडी नोट्स आर. इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन डू, बट उसमें मल्टीपल लेंथी इंफॉर्मेशन है. ऐसी इंग्लिश यूज हुई है कि आपके समझ से बाहर हो जाएगी. आप नहीं इसको ग्रैब कर सकते. आपको मेरे लेक्चर से ही कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. बट इफ यू वांट टू रीड, आई विल शो यू के नोट्स कहाँ पड़े हैं, वहां से आप रीड कर सकते हो. दिस इज ऑन योर WFG Oliver's स्टडी नोट्स टैब. वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो सच्ची बात है कि सर से ऊपर से निकल जाती है. तो उस्मान समझ भाई, में नॉट नहीं. नॉट अ बिग डील फॉर दैट. आपको देखिए, मैं अगर आपको बोलूं कि उस्मान भाई ये बाइसाइकिल है, और मैं हल्का हल्का आपको चला के बताऊं कि ये देखें ये बाइसाइकिल ऐसे चलती है, फिर भी क्या आप बाइसाइकिल चला लोगे मेरे जाने के बाद? गिर जाओगे. जब आप मेरे जाने के बाद फिर से देखोगे कि बाइसाइकिल कैसे चलती है, फिर एक और दफा देखोगे बाइसाइकिल कैसे चलती है, तो फिर चला लोगे. तो मैं जब इसको रिकॉर्ड करके आपको लिंक दूंगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप इसको एक दो दफा देखो इस वीडियो को, तभी चला पाओगे. नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता. मैं रोज रोज तो 2-2 घंटे नहीं करा पाऊंगा ना एक ही चीज. सो मैं वो रिकॉर्ड कर दूंगा, आप इसको बार बार देखो. सी इट ओवर एंड ओवर अगेन, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात हो रही थी, क्या चीजें हो रही थी. अपने नोट सामने रख लेना जो आप लिख रहे हो, वो सामने रखो, वीडियो दोबारा वॉच करो, गो ओवर इट अगेन, तो चीजें हो जाएगी आपकी. ठीक है. बट हाँ, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि अभी इस लेक्चर से आप राइट अवे एकदम सारे कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लोगे. यू हैव टू वॉच इट कपल ऑफ टाइम्स टू ग्रैब इट. ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, सबसे टफ मॉड्यूल है, और इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है. तो ये मैं टाइम ले लेके करा रहा हूँ, बट ये अच्छे से करना है. ठीक है. कुमकुम, यस, यू वांट टू से समथिंग? Um, what happens in RRSP? I have some question if I put the payment which I'm paying for disability insurance in the expense, then I will be getting benefits which will be taxable. But Yes. when I will be getting benefits, that time my tax bracket will be lower because I'm getting less income. I'm getting 60% of my income. So I will pay less taxes on that. So is it a good idea to do that? Okay, so this is not an option available to individual disability plan. This is an option only available if you are buying a disability plan from your corporation. It's only option available to business owners that they can show this to in their expense. For them,
it's never a good idea because business supposed to increase in their annual income. Similarly, if it's not a good idea for even personal level as well, let's say you are only 25-year-old. So unless you're not 65 when your income is completely stopped, आपकी इनकम बढ़नी है अगले आने वाले सालों में. So how come your tax bracket be down? It's gonna be difficult. So it's not a good idea to show that as a tax deductible expense and then get the benefit taxable. It's always good that do not discount it or do not show it as an expense right now and get the benefit tax free, especially when you're young, right? But when if you're close to the old age, then there could be a question you want to show it or don't want to show it. Sounds good, Kumkum? Yeah, so basically the option is available or not? So the option is available only to the businesses, not to the individuals. Okay, that's clear now. Okay, it's only business can write off in their expenses. You know, as an employee, can you write off something as an expense in your taxes? No. No, so simple as that. Employee होते हुए कोई हमारे पास option होती ही नहीं है. All these options are available to the businesses. So business people can show expenses to accountant. They can write it off as a tax deductible benefit. So ये बात हो रही है group plan की, where people have a disability insurance from their company employer. Then I'm telling about how is the treatment of taxation. But if you're having an individual disability, simply you can do that and you will always receive benefit tax free if this is your individual plan. Okay, sounds good. All right, so guys, next, now I think taxation should be done. Next thing, I'm going into the group disability insurance plan now. Before we were discussing the individual so far. Now I will shift a little bit attention to what? Group. So group disability plan में similar चीजें हैं. सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए. There is a plan sponsor who on the behalf of employer execute the plan. There is always an insurer, which is an insurance company, and then there are always members. Members are always the employees. And members are also life insured and beneficiary of the plan and disability. But who is the owner of the plan? Policy owner. Plan sponsor. Who is plan sponsor? A employer Company. or a person Employer. nominated by employer? Our employer. Employer. Yes, so that they are the owner of this plan, not the people. People are only life insured and beneficiary, not the policy owner. They cannot make changes. They cannot dictate anything else. All right. So the next one is provider of group disability. It's all right. Employer, employee, most. Okay, just leave this. Types of group disability insurance plan. Now, this is a very important topic. We're going to now go into the types of group disability. So in group disability, there are two major types. I think everybody might have heard. One is STD, short-term disability, and one is LTD, long-term disability. So these two terms are only applicable to group disability insurance plan, not available in individual disability plan. Sounds good? अभी तक हमने ये दो terms individual में नहीं पढ़ी हैं. So STD and LTD, short-term disability and long-term disability, is only applicable in group disability insurance policies. Now, what is STD? So STD, as name suggests, short-term disability, it normally provides a protection for 12 months. Let's say if some employee gets disabled and the employer has this group plan for all the employees, then if first an employee get disabled and in first 12 months, which kind of insurance will pay him? STD, short-term disability. But if employee stays disabled longer than 1 year, then after 12 months, which one will kick in? LTD, long-term disability. So that is the cutoff. My question is, what is the waiting period of long-term disability? Anybody who can tell me the waiting period of long-term disability? अगर एसटीडी पे है और वो लॉन्ग टर्म पे उसके बाद जाता है फॉर एग्जांपल, तो आई गेस 0 होनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी एसटीडी पे था.
ये मेरा कॉन्सेप्ट बन रहा है इसको पढ़ने के बाद कि अगर एसटीडी 12 मंथ्स तक है तो वो ले ही रहा है वो एसटीडी, अगर वो उसको कन्वर्ट करता है एलटीडी में, रिकवर नहीं My करता है question तो is different. My question is, what is the waiting period of an LTD, long term disability? Waiting period, benefit कब से मिलना शुरू होंगे? 90 days. So whatever the length of STD is, that is also the waiting period of LTD. Okay. देखिए 1 साल तक तो क्या मिलेगी उसको? शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी. सो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का वेटिंग पीरियड 1 ईयर हो गया ना, वो तो किक ही नहीं आफ्टर 1 ईयर होगी. सो वट एवर द टोटल बेनिफिट पीरियड ऑफ अ शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी इज, this is also the waiting period of long term disability. So short term disability gets paid for maximum of 12 months. That means the maximum you can delay LTD is also 12 months. Sounds good? Okay. Another important thing that you need to make note, short-term disability covers your income for 70 to 75%. Make a note of that. Short-term disability, while some employee is receiving short-term disability from the company, the benefit is 70 to 75%. But you need to see whenever the benefit is high, 70 to 75%, this benefit is also taxable. This benefit is also taxable. You have to pay taxes on that. Write it down. The STD benefits are taxable benefits. Clear? Okay. Now LTD benefit is 55 to 60%. Long-term disability benefit is 55 to 60%. And write down in bracket, long-term disability benefits are always tax-free. Doesn't really matter employee contribute or employee don't contribute. LTD benefits are always tax-free. Clear? Okay. Another important concept that they might confuse you. वो कहते हैं कि मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरे पास ईआई की भी एलिजिबिलिटी है कि मैं ईआई से भी बेनिफिट रिसीव कर सकता हूं, मैं शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी का प्लान भी मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दे रखा है, मेरे पास लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी भी है, अभी मैं डिसेबल हो गया हूं, सबसे पहले कौन सा प्लान मुझे पे करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शॉर्ट टर्म. यस यस यस, ग्रेट. सबसे पहले शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी से पेमेंट आना शुरू होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि शॉर्ट टर्म से भी ले लो ईआई से भी ले लो, दो दो नहीं ले सकते. कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट वी लेकिन डिस्कस असद भाई अगर आप जॉब पे हैं तो पहले ईआई नहीं आएगा? सो स्वान भाई ये कॉन्सेप्ट है, ईआई जो है ना वो आपको पहले हफ्ते के बाद पे करना शुरू करते हैं. 7 डेज का वेटिंग पीरियड होता है ईआई में. सो इन फर्स्ट 7 days द एम्प्लॉय विल गेट पेड फ्रॉम वेयर? एसटीडी. फर्स्ट 7 days. And from the second week, EI will take over. Okay. From the second week, EI will kick in and EI will go on for next 15 weeks. How many weeks? Next 15 weeks, employee will be covered from EI. But first 7 days, employee will get covered from where? STD, short-term disability. After 15 weeks, let's say employee is still disabled. Abhi kya hoga? Again, STD will come back to protect. So from 17th week, STD will take charge again. 17th week. All clear? First 7 days, STD will pay the benefit. Next 15 weeks, EI will pay the benefit. Then there is a week delay. From 17th week, STD will again start paying back if the employee hasn't recovered. And once it is complete 12 month, STD will also be stopped. Then it will be moved to LTD, long term disability. Sounds good, guys? ये जो लॉन्ग टर्म है ये 17 वीक्स के बाद स्टार्ट होगी? नो नो स्वान भाई, 17th वीक के बाद एसटीडी वापस किक इन कर जाएगी. वो तो सही है. और लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का मिनिमम वेटिंग पीरियड 1 साल होता है. अगर 1 साल तक एम्प्लॉय ठीक नहीं हुआ तो आफ्टर 1 ईयर उसको एसटीडी खत्म हो जाएगी और एलटीडी शुरू हो जाएगी उसकी. वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी या हमें करना पड़ेगा उसके लिए? अगर एम्प्लॉयर ने ऐसा प्लान ले रखा है वो अपने लेके एम्प्लॉयज रखा के हो, लिए ओके. तो फिर होगा. अगर एम्प्लॉयर ने कोई चीप प्लान ले रखा है इसमें एलटीडी ऑफर ही नहीं कर रहा तो फिर तो खत्म हो जाएगा फिर. यस साद. अच्छा, ये जैसे एलटीडी है और एसपीडी है, एक तो हमारे एम्प्लॉयर ने हमें प्लान दिया हुआ है, एक हम ये पर्सनली खुद भी ले सकते हैं अगर एम्प्लॉयर ना दे. Personally, you know, this is
only this feature is only available in group disability plan. In individual disability plan, there is nothing like short-term disability, long-term, because individual disability plan always covers you 24/7, rest of your life till 65. You don't need that. This is basically when employer is giving some benefit to the employee. There is always clauses, cut off, different situations. So LTD and STD is only applicable in group disability insurance, not in individual. Okay. All right. So I think that is what was important from STD and LTD. EI is already calculated. Okay. What percentage of income EI pays? 60 to 65. No, EI pays 55%. EI pays 55%. What percentage of income STD pays? 70 to 75. 70 to 75%. Very good. What percentage of income LTD pays? 80, 55 to 60. 55 to 60. Very good. Very good. कितना 55 to 60%. LTD pays LTD this. भी 55 to 60 होगा Yes. EI only 55, not 60. EI only 55. Okay. So which benefit is tax free out of these three? EI, LTD STD, or LTD? LTD Yes, LTD is the only one which is tax free. Okay. I hope that you guys are good with this. Now let me go on to the next concept, which is disability during a leave of absence. They might ask it. कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉई छुट्टियों पे चला जाता है, मैटरनिटी लीव पे चली गई लेडीज, पैटर्निटी लीव पे चले गए जेंट्स, मेल्स, or any kind of other illness, leave of absence, that I'm not feeling well, I want to take care of my old aging parents, or maybe I need to take care of my newborn baby, so I'm taking some time off, which is known as leave of absence. This is up to employer whether they give you or grant you leave of absence or not, clearly. But let's say, Kiran, you had a disability plan from your employer जिसमें आपको STD LTD दोनों प्लान मिल रहे थे. अभी आपका बच्चा छोटा था, आपने कहा मैं साल की लीव ऑफ एब्सेंस पे जा रही हूँ, आप चले गए लीव ऑफ एब्सेंस पे, उन्होंने अप्रूव भी कर दिया आपको, तो आपके डिसेबिलिटी बेनिफिट को क्या होगा उस बीच में? आपको मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? Like technically, Asad, I think it's not a disability because I'm telling them that I just need to take care of my kid, right? So Yes. technically speaking, it shouldn't be a disability. लेकिन अगर मैं जैसे ये कहूँ कि नहीं, I'm having postpartum depression or something, तो उस पे हो सकता है कि मैं maybe on those grounds मैं No, no, कहूँ कि Kiran, depression or question ये नहीं है. postpartum. I think you're right, but understand the question. Let's say you were on leave. अभी आप वो डिसेबिलिटी नहीं है कि आपने रीजन तो डिसेबिलिटी की नहीं है, बट उस लीव पे आप डिसेबल हो गए हो काम करते हुए गिर गुर के. अभी बेनिफिट मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? आप छुट्टियों पे थे, छुट्टियों पे किचन में काम करते करते आप स्लिप हो गए, अभी आप डिसेबल हो गए हो, अभी नहीं नहीं, फिर ये तो डिसेबिलिटी आई थिंक जो मुझे याद पड़ रहा है, इट वाज ओनली इफ यू वर वर्किंग, आपके वर्किंग टाइम में जो जो एक आपके ऑफिस आवर्स थे, इफ यूर डिसेबल्ड, कोई एक्सीडेंट उधर पे हुआ है वर्क प्लेस पे, या आप ऑफिस के किसी काम से किसी असाइनमेंट पे आप बाहर निकले हुए, मे बी यूर ट्रैवलिंग ऑन एन ऑफिस थिंग, कोई आपको कहीं पहुंचना है किसी मीटिंग में एंड यू हैव बीन गिवन अ टास्क और वहां पे रास्ते में कुछ होता है, तो आई थिंक दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। कोई इंश्योर, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी होंगी तो मैं कहूंगी नहीं, अगर आप तो ऑफिस में तो थे नहीं, आप तो लीव पे थे, तो आई and वुड that is ट्राई true. टू नॉट टू गिव देम. And that is absolutely the case. So, just a rule of thumb, if you are on a leave of absence, this is employee responsibility to contact the employer and ask them, am I eligible for disability benefit or not? Some policies do cover, majority don't. And in that scenario, company might tell you, hey, Kiran, while you are on this lengthy leave of absence, you need to pay from your pocket if you want to maintain the benefit. If you pay from your pocket, then if you get disabled, they will cover you. But if you don't pay from your pocket during leave of absence, you will not be getting any benefits. Clear? That is a clear rule on leave of absence. You need to talk to your employer and ask him whether you can contribute during that absence from your pocket just to maintain the benefit. That is up to the employer. Sounds good? Mary, Kiran, clear hai? Awesome. So next topic is
Qualification period. Qualification period is very, very important when we talk about group disability. Why? Because whenever you join a corporation, every employee undergo a probation period. Clear? Everybody goes through a probation period. Some company says 1 month, some says 3 month probation period, some says 6 month probation period. Until employee is serving the probation period, he will not be enrolled into any group disability plan. They only start doing your paperwork once your probation is completed. Clear? आप सबके साथ भी ये जॉब पे कभी ना कभी हुआ ही होगा that on your probation you are not entitled for any benefit. Once you are done probation, then you get all the benefit. So this is what qualification period is. This is normally 30 to 90 days depending on employer probation period time. Anybody has any question? Yes, Jaya? So is the enrollment mandatory after the probation period is over? Enrollment for these plans, these group plans, Jaya, it's mandatory if employer is contributing everything from their pocket, then it's mandatory. But Okay. if you have to contribute from your pocket, then it's your choice. You might opt out. Okay. Okay, then you might opt out. Now, next one is, yes, so in this one, one terminology is called a non-participating group disability plan. As name is suggesting, non-participating. So this means that all the premium is being paid from employer. Being an employee, I am not participating in the premiums. So this is a non-participating group disability plan where employee is not contributing in any premium. All the things have been taken care by the employer. Clear? This is non-participating group disability plan. And or vice versa, if there is a participating disability plan, then what happens, Jaya? All right. Then the employees are paying into it. Yeah, then that means it's a participating disability plan, then employees are also participating with some kind of pitch-ins. They are also contributing on a monthly basis. Clear? So this is non-participating and participating. Termination of membership. Whenever you don't remain employee with that employer, the same day your plans are terminated. Because remember, who was the owner of the plan? Employer. Now you are no more employee with the company, so your benefits are from the same time you'd give your resignation letter, your benefits are gone, terminated. That is why it's always preferable that maintain your own individual disability plan, because this plan is also issued based on yesterday gender and age. The prices are based on gender and age. Let's say you work for an employer 10 years, employer gave you 10 years plan, now you decided to quit that employer and now your plans are gone, but the next employer is not giving you any plan. Now you want to go for your own personal plan, but now your age is 10 years older and your premiums are higher. See, that is what a problem that can arise if you switch company and the next company is not offering any plans. So it's better to have your own individual personal plans. Whatever you get from company is icing on the cake, because that icing can be taken away anytime. Sounds good? It's complete discretion of the employer. They want to give the benefit to employees or not. Whenever they feel like they want to save some money, they can take the benefits away. It's always better that you have your own personal plans, individual plans, and then you get whatever you get from corporation or your employer as a bonus on that. Sometime when people tell me, I sit down with them, they say, hey, we have corporation group, we have employee plans from our employer. I say, hey, do you wish to work with the same employer till age 65? If that is the case, then you're okay. But if the answer to this is no, that you might switch, so then maybe next employer might offer you the benefit. It's good that you have your own and enjoy the remaining as a bonus. Sounds good? Okay, so the next important concept is all source maximum. Sometimes also it is called group offset amendment. Okay, so this is an important concept. This is only available in which type of plan? Group plan.
right? So let's say, Jaya, you are entitled for a group disability plan where your 60% income is protected. But Jaya wants to have more protection in place, and Jaya is also keeping her own individual disability plan. Now, if she has her own plan and she has a group plan with employer as well, the maximum she will now get from both of these plans is 85% of her income. Sounds good? That is only possible if she has a group plan from her employer, plus she also has an independent disability plan. Now from both of these plans, first which plan will pay? First her group plan will pay 60%, and the remaining 25% who will pay? Then Jaya, this is your individual plan, will pay the remaining 25%. So that is known as all source maximum. Clear? All right. So what is the maximum amount of protection anybody can get from all sources? What is the answer? 85%. Maximum that you can get from all sources is 85%. But for that, you should be having benefits offered from your employer as a group plan. And then you have some benefits coming from some other plan, maybe your own individual plan. Then all source maximum can be 85%. Not more than 85% of your income before disability income. Okay. All right. Clear. Integrating a group policy with an individual policy. Okay. All right. Now the next is, if you are a part of a group disability plan with an employer, and now you decide to change your job, and but the next company is not giving you any disability benefits, what you can do, you can contact the insurance company and you can convert your group plan from that point to your individual plan. You can convert it to an individual plan, but you need to pay premium according to your age and health. But the best part is you don't have to go through medical examination, because they will exclude your medical exam. They will approve you for the plan, but they will charge you the premium as per your current age. Okay. So you can convert a group plan into individual plan when you leave or you decide to leave the company, subject to that you are paying the premium of the current age. Yes, you get one advantage. You don't have to go through a medical underwriting. They won't do any medical testing, but that is an important concept. Next one I'm going to talk about is creditor disability insurance. That is insurance offered to us on our credit cards. Insurance of disability insurance offered to us from banking institution or lending institution. Remember, that's the third type of disability plan: individual, group, and then disability plan offered by lenders, financial institutions on the credit card. So this is technically the worst type of plan. It is not, out of all these plan, individual plan, group plan, and creditor disability plan, which one is most expensive? Most expensive. So the most expensive plan, Individual. yes, most expensive plan will be individual. Why? Because you have so many features and benefits on individual, and that is going with you. So of course, this is your own customized plan. That is the most expensive. Second expensive plan is creditor disability, which is provided to you from your lending institution. That is second most expensive after individual. And least expensive or the cheapest plan is group disability, because they are getting a group rate from the company. So that is the cheapest. But where you have least amount of ownership, group, you don't have any ownership. They can discontinue plan anytime. Where you have second least amount of ownership is with credit card based disability, because in this kind of disability, you are the policy owner, but your lending institution is the beneficiary. Bank is the beneficiary.
So you have some kind of ownership, but not complete. But in individual plan, you are the policy holder, you are the beneficiary, you are everybody, so you control the plan. That is why that is the most expensive. Second one is creditor provided disability, which is the bank. Least expensive is employer provided disability. Okay, clear with this? All right. So guys, that bring us to the conclusion of this chapter number 2. I think we've gone through this in 2 different phases, but I can guarantee you, Kiran ji, 60% एग्जाम इसी चैप्टर से आना है. आई कैन गारंटी यू, ये जो कल की और आज की वीडियो है, आप इसको सुन सुन के घोल के पी लें अपने दिमाग में. समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पर्सनल टाइम पे इंडिविजुअल कॉल करें, ऑफिस में बैठे मेरे साथ, जूम पे बैठे क्वेश्चन अटेंड करें, बट मैं उसी को एंटरटेन करूंगा जो कम से कम इन 2 लेक्चर्स को 1-2 दफा सुन चुका है. वरना मैं अपनी बताई हुई बात को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा. बट वंस यू आर डन 1 or 2 टाइम लिसनिंग दिस, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही, देन give me a call or come to office and I will help you, because 60% exam is going to come from chapter number 2. Disability alone is a very, very big, diverse and very important topic. So with this, I'm gonna stop record.